the concept, the sum of modules. So if so what is the definition? So we know that we can introduce the addition operation between ideals. In the same way, we can introduce the addition operation between submodules. So sum of submodules. So definition that if n and k, because actually we are trying to replicate the concept which we already studied for rings. So for example, in the last class we studied the concept of homomorphism, or the quotient ring, or the factor ring in the case of modules. So in the same way, first we will see the concept of the sum of submodules, and then we will introduce a few more concepts which are related to submodules, and after it we will see the concept of direct sum of modules. So what is the, how can we define the sum of modules? That if n and k are submodules of M, then n plus k could be defined just in this way, that it contains elements which are in the form of x plus y, where x is an element of n and y is an element of k. So this is an R submodule of, this is an R submodule of M. So one can see that actually why this thing is a submodule n plus k, because elements are in the form of x plus y, where x is an element of n, y is an element of k. So if we take two elements from here, which are in the form of x1 plus y1 and x2 plus y2 from n plus k. So from here, x1 and x2 are from n, and y1 and y2 are from k. So after taking their difference, x1 plus, so what I will get, x1 minus x2 plus y1 minus y2. So again, this is an element of n, because x1 and x2 are from n, so their difference is also from n, and y1, y2 are from k, so their difference is also from k, because n and k are R submodules. So this thing shows that this whole thing shows that this whole thing, the whole sum is an element of n plus k. So this simple computation shows you that if two elements are from n plus k, then their difference is also an element of n plus k. In the same way, one can see that. So if you multiply an element of ring with an element of n plus k, so it is equal to Rx plus Ry. So again, Rx is an element of M, Ry, since X is an element of N, so Rx is an element of N, and Y is an element of K, so that's why Ry is an element of K. So this whole thing is element of N plus K. So again, this thing shows you that if you take an element of N plus K and an element of R, so and multiply R with that element, so again you will get an element in N plus K. So step 1 and 2 implies that N plus K is an R submodule. So okay, so this is the
So we will study this submodule later in detail. But first I will introduce some important submodules of an R module M. तो एक important submodule इस तरह से है कि that with the help of two submodules I can construct a new submodule which is n plus k, because if n is an R submodule, k is an R submodule, then k n plus k is also an R module. So this is also giving us a way to define new submodule with the help of old submodules. So next जो definition है इसको चले आप अगर example से ये understand करना चाह रहे हैं तो let's say if you are taking Z6 as a C module, then let's say n it is equal to 0 to 4, it is a submodule, and k it is equal to 0 and 3, it is a submodule. So you can define n plus k in this way. This n plus k contain elements. You can add 0 with any element, so you will get 0 plus 0 and 0 plus 3. You can add 2 with any element, so you will get actually 2 plus 0 and 2 plus 3, and then 4 plus 0 and 4 plus 3. So this is equal to 0, 3, 2, 5, 4, and 4 plus 3, 7, 3 equal to 1. So one can see that actually the sum of submodules is the whole submodule Z6. कि दोनों submodules का जो sum है वो पूरा का पूरा Z6 के equivalent है. So in this way, so actually in this way you can take the sum of submodules. Okay, so class, any problem in this concept? Any problem in this example? आज ज़्यादा लोग online है, तो लोग. No, sir. No, sir. Thank you. Now next. We can also define a submodule. So in the first definition, we can define a submodule by taking the sum of two submodules. Now we can, with the help of an ideal of R. So let M be an R module. Let M be an R module. And I is an ideal of R. So with the help of an ideal of R, I can also define a submodule of M. So, and which is defined in this way, that IM, it contain elements which are in the form of AI, XI, where AI is an element of I and XI is an element of M. So class, what is the concept that by multiplying elements, so in general, you know that this thing holds that if M is an R module, so अगर मैं R के elements को M से multiply करवाऊंगा, so again I will get something. So I will get again by multiplying an element of R with M, I will get an element of M. So in general, it is this thing is equal to. In general, this thing is equal to M. So because M is close under scalar multiplication, so if you multiply elements of ring with elements of M, so you will get an elements of M. So in general, if you multiply a ring with M, so you will get M. But now what they are doing now, but if you multiply an ideal of R with M, so in general you will not get the whole R module M. You will get a subset. You will get a subset of M. And what I am claiming that this subset is also an R module. So actually this R module is defined with the help of M. So with the help of I, where I is an ideal of R. So by multiplying I, which is an ideal of R with M, you can also define a submodule, an R submodule of M.
So what is my claim? That I of m is an R submodule of M. And actually here, just try to see that here it contains elements which are in the form of AI, Xi, where this AI actually is sitting in I. So again, for the first property, I will take two elements from IM. So let's say first element is in this form, and the second element, which is in this form, both are elements of I of M. So that is this thing. This is an element of I. All AIs are elements are sitting in, or AIs are sitting in I, and all BIs are sitting in I. So by taking the difference of these two elements, I will get elements which are in the form of summation of AI and BI. So one can see that this AI minus BI, it is also an element of I, which shows that this combination is an element of IM. Now for the second part, if R is an element of R and summation of AI Xi is an element of IM, so R multiplies summation of AI Xi. So just I will multiply R. So what I will do, I will multiply R with this thing, with this combination. So this combination could be written in this way. Okay. Now we know that this thing is an element of I, and this part is an element of ring. So this is an element of I, and this is an element of ring. So if you multiply an element of ideal with an element of ring, so overall you will get an element of this ideal. So again, RAI is an element of I. So which define that this whole combination, by definition, if every here everything is in this combination, which is multiplied with Xi, is an element of I. So the whole combination is also an element of, or the whole linear combination is an element of I of. So if we multiply an element of ring with an element of IM, which is in this form, where AI, we know that this AI is an element of I. Then if you multiply R with this combination, then it is equal to summation of Ri AI. So Ri AI is an element of I. Since I is an ideal of R, so if you multiply an element of ideal with an element of ring, so you will get an element of ideal. So in general, so the whole linear combination is an element of I of M. So this thing proves that I of M is an R submodule of M. Now just try to see this thing concept with the help of an example. Okay, so let's say if M it is equal to Z iota, we know that this is a Z module. So we know that it contains which are element in the form of A plus iota B, where A and B are integers. So for an ideal I, let's say 2Z. So 2Z is an ideal of Z. So now here IM is defined in this way. So how IM is defined in this way, that I will multiply elements of 2Z with elements of Z iota. So after multiplying elements of 2Z with elements of Z iota, what I will get, क्लास मुझे किस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे?
So after multiplying elements of 2z, because the elements of z iota are just Gaussian integers, a and b. So अगर मैं इनको और even सर आपको आपके जो ए बी है वो फिर 2z में आ जाएंगे. ये 2z में होंगे, they are even actually. So actually you will get elements which are in the form of c plus iota d, where c and d are in 2z. So in general, actually you will say that this is you can also define it as 2z iota. You can also say it is 2z iota, and it is an or it is a z submodule of, and this is a z submodule of z iota. Okay, so now one more important submodule, which is termed as a torsion submodule. So let R be a ring. So okay, in the case of ring, we have a concept of a zero divisors, and we know that the set of that, and how can we define a zero divisor? That if the product of two non-zero element, it is equal to, if the product of two non-zero element, it is equal to 0, then we will say that A and B are zero divisors. 0 could also be considered as a zero divisor, but we are more interested in non-zero zero divisors. So in the same way, we can define the concept of, so before defining the concept of torsion submodule, I need to define the concept of torsion element. So an element of M, so let R be a ring. So ring तो हमने assume ही किया हुआ है. So an element x of M is a torsion element if when M is an R module, M को मैंने R module assume किया हुआ है. An element of X is a torsion element if Rm it is equal to 0 for some R in R, and this R should be non-zero for some non-zero element of R. Then X is called, sorry, this X, this M, an element M of M is called a torsion element if Rm is equal to 0 for some R in R. So again, we can see this concept with the help of an example. So let's say R it is equal to Zn. हाँ, M कर दिया, असल में मैं M को use कर रहा था. An element M of M is a torsion element if R of M is equal to 0 for some R. So if after multiplication with some non-zero element of R, you are getting answer is equal to 0, then we will say that that element M is a torsion element. इसको लिख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि let Zn और Z60 से लेकर लेते हैं be a C module. Z6 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार and 4 bar, 5 bar. Now you can check that 0 is always by definition इसके मैं torsion elements compute कर रहा हूँ. So you can check that 0 bar is a torsion element because 0 bar को मैं किसी भी element के साथ z के साथ element के साथ multiply, because यहाँ पे r किसके बराबर है? z के बराबर. नहीं, ये तो 0 bar, ये 6 तो है नहीं ना. 0 bar 6 bar एक ही है. Is a torsion element because
मैं इसको किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ पे आर क्या होना चाहिए, रिंग का एलिमेंट होना चाहिए ना. So if I multiply this thing with an integer, then I will get again, I will always get a Torsion element. So actually 0 is always a Torsion element. So you can say that 0 is always a Torsion element. As अगर 1 एलिमेंट है C का, तो आपने जैसे ही 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर क्या आएगा, तो 0 ही आएगा. So in general, अगर 1 है एलिमेंट R का and if you multiply 1 with 0, you will get 0. So that's why 0 is a Torsion element. Now try to see that 2 bar no. तो लेट्स से 2 बार को आप चेक कर सकते हैं कि अब आप ये कह सकते हैं कि 2 बार को 3 से मल्टीप्लाई करो. 2 बार नहीं, 4 नहीं होगा. 2 बार इज जैसे सारे ही 2 बार इज अ टॉर्जन. ये तो सारे ही टॉर्जन होंगे ना, क्योंकि किसी को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 बार इज अ टॉर्जन एलिमेंट बिकॉज 2 into in the same way 3 बार भी है. अच्छा ये तो 3 into सॉरी 3 into 2 बार, और अगर 2 को 3 बार से करेंगे तो आंसर 0 आएगा. What you can say about नहीं, 1 Torsion element नहीं होगा. 1 is, ये याद रखिएगा that 1 is not a Torsion element. 1 bar is not. Why? 1 को 6 से Torsion मल्टीप्लाई element करें. की कंडीशन है ना कि नॉन जीरो रिंग के नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 आना चाहिए. तो आप 1 को आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट के इंटीजर सर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 हाँ 1 6 सॉरी मैंने जी लिया, वरना जी 6 के ऊपर नहीं होगा. So 1 bar, so 1 bar is also a Torsion element. Yes, in this case. So in this case, actually you can check because 6 into 1 bar answer 0 aa raha hai. So in fact you can check let's say 5 bar bhi hoga and 4 bar bhi hoga. 5 bar को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओके 6 से मल्टीप्लाई करा दें. इनफैक्ट आप हर एक को 6 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर देंगे वो 0 यानी कि होता रहेगा ना. तो एक्चुअली हियर एवरी एलिमेंट इज अ टॉर्जन एलिमेंट. ओके नाउ चलिए ये एग्जांपल हमारे पास हो, ये एग्जांपल हो गए. हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा अपना डिफरेंट कर. अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज डिफाइन करवा दूं कि जो फर्दर दैट पहले मैंने टी और या में डिफाइन करा रही है, तो अब मैंने जो टॉर ऑफ एम होता है, टॉर ऑफ एम एक्चुअली इज अ सेट ऑफ टॉर्जन एलिमेंट्स ऑफ एम के इक्वल होता है. किसके जितने, या टॉर ऑफ यहाँ पे आर भी लिखे हैं. टॉर ऑफ आर एम इज अ सेट ऑफ ऑल टॉर्जन एलिमेंट्स ऑफ एम. So here in this example, in the first example, जो टॉर ऑफ Z6 आया, what is the टॉर ऑफ Z6 by assuming Z6 as a Z module, ये पूरा का पूरा Z6 के इक्वल आ गया because every element is a Torsion element. Now in the next example, okay, let now we are assuming Z6 as a Z6 module. Z6 from a Z6 module. So here again we have 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, and 5 bar. So here one can check that 0 bar, okay, Torsion element है, but now 1 bar is not a Torsion element because आप 1 bar को किसी भी चीज मल्टीप्लाई करके 0 आंसर नहीं आएगा. You can check कि 1 bar को आप किसी से और मल्टीप्लाई करें, you will not get the answer 0. So 1 bar is not a Torsion element here. 2 bar is a Torsion element because if you multiply 2 bar with 3 bar is equal to 0. So 2 bar is a Torsion element.
3 bar is a torsion element. And what about 4? Yes, sir. 4 3s are 12. So 4 is a torsion element. This is a torsion element. Okay. Okay, let's say, and what about this 5? Okay, I think 5 is not a torsion element. So here torr of Z6 over Z6, this is just equal to 0 bar, 2 bar, 3 bar and 4 bar. Okay, यहाँ पे हमने torr compute कर लिया. Okay, okay, one more example and then now let's say Z8. Let Z8 be a Z module. Z8 को मैं Z module ले रहा हूँ. So again, there are 8 elements in Z8: 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, and 7 bar. So here one can check that 0 bar is a torsion element. Now what you can say, again इधर अगर मैं इसको Z module मैंने ले लिया तो I don't think so कि I will not get okay because 1 को अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई करवाया, हाँ सभी को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करा दूँ so again not about Z8. ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है. मैं एक और चीज ले दूँ, इससे कोई इतनी खास चीज सामने नहीं आ रही क्योंकि वो वैसे ये Z6 वाली केस बन जाएगा. ओके, तो लेट Z5 बी अ Z5 मॉड्यूल. ये कंसिडर करता है. If we consider Z5 be a Z5 module, so here what you can say about torr of Z5 over Z5? ये थोड़ा सा इजी केस है. जीरो तो होगा. सो एक्चुअली Z5 हमें पता है कि Z5 अगर Z5 के ऊपर मॉड्यूल है तो एक्चुअली ये रिंग की तरह एक्ट कर देगा, क्योंकि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो रिंग मल्टीप्लिकेशन है, और रिंग में हमें पता है Z5 इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स, तो इसमें कोई जीरो डिवाइजर्स नहीं होते. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जीरो के अलावा और कोई नहीं. ओवर Z5 है ना, Z मॉड्यूल नहीं है ना, ओवर Z5 है. Z ओवर Z5 को अगर ले रहे हैं तो अगर आप Z5 में कोई लेट से अगर आपने 2 लिया तो 2 को आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर 0 नहीं ला सकते, नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मिलकर, तो सिर्फ 0 होगा. तो एक्चुअली 0 इज द ओनली टॉर्जन एलिमेंट. सो क्लास इन जनरल देखें, वैसे तो आपको यहाँ पे जो टॉर्जन है ये आपको यहाँ पे सब मॉड्यूल नजर नहीं आ रहा, बिकॉज दिस थिंग इज नॉट अ, you can say that this thing is not a Z6 submodule. मगर यहाँ पे आपको ये although trivial नजर आ रहा है, but this is a Z5 submodule. So
टॉर एफ एम, तो व्हेन टॉर एफ एम इज अ सब मॉड्यूल, यानी कि एक केस में टॉर ऑफ एम आपको सब मॉड्यूल नजर नहीं आ रहा, बिकॉज ये क्यों सब मॉड्यूल नहीं है, बिकॉज हेयर इफ यू add 2 with if you add 2 with 3 you will get 5, which is not here. So 5 is not an element in the TOR. So that's why it is not a C sub module. But in this case, TOR is a sub module. So any idea that when TOR of M is a sub module, TOR of an R sub module M. So क्या हो गया, क्या चीज प्राइम है? नहीं, M तो M के प्राइम होने का मतलब क्या है? M एक R मॉड्यूल है, लेट M भी एन R मॉड्यूल। नहीं चले यहाँ पे, अच्छा हाँ ये चले ठीक है, आपने कह दिया कि ये प्राइम हो, और ये जब प्राइम होता है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या हो जाता है? तो इंटीग्रल डोमेन क्या फील्ड होता है या इंटीग्रल डोमेन होता है? दोनों होते हैं। तो एक्चुअली तो इंटीग्रल डोमेन, सो इन जनरल जस्ट हमारा ये कमेंट है कि दैट इफ जो हमारा थ्योरम ये कहता है that if R is an integral domain, yes class वेट कर ले, मैं लेक्चर सेव कर लूँ, चेहरा आ रहा था। So what is the theorem that if R is an integral domain, so if R is an integral domain, then TOR of M is an R submodule of M. So in general, it is TOR is not an R submodule, but over an integral domain. So if R is an integral domain, then TOR of M is an R submodule of M. So we will see that actually this condition is required to show that TOR of M is an R submodule. So so for the first step, so we will take two elements from the TOR. So let's say X and Y are sitting in the TOR of Rm. So what is the meaning of this thing? It means that R of 1x, it is equal to 0 for some R1 not equal to 0 in R, and R2y, it is equal to 0 for some R2 which is not equal to 0 in R, because these two elements are Torsion elements. X and Y are Torsion elements. Now what we need to show? We need to show that their difference, we need to show that X minus Y is also a, we need to show that X minus Y is also a Torsion element. For this purpose, we need to construct an element of R such that the product of X, that element with X minus Y should be equal to 0. हमें ये show करना है that if these two are Torsion elements, so sorry, if X and Y they are Torsion elements, if X and Y are Torsion elements, then their difference is also a Torsion element.
So if x and y are Torsion elements, so the product of x with some element, non-zero element of R is 0, and the scalar multiplication of y with some non-zero element R2 of R is equal to 0. Now we need to show that x minus y is also a Torsion element. That is, we need to construct a non-zero element in R such that the product of or the scalar multiplication of that non-zero element with x minus y should be equal to 0. So what do you think वो non-zero element क्या होगा? R1 R2 R1 and R2. R1 times R2. But class एक ये भी तो possible हो सकता है that R1 R2 0 हो. In general तो possible हो सकता है कि दो elements ring में 0 हो. वो इंटीग्रल डोमेन है. यहाँ पे अब हमारे पास concept वो required है. अगर मैं generally ring पे काम कर रहा होता, then I cannot guarantee that this R is not equal to 0. But now this thing is not equal to 0 since R is an integral domain. अगर R integral domain नहीं होता, then I cannot guarantee that then it could be a zero element. So we can select R1 and R2 could be a required element, but R1 and R2 would be good. Would mean that it would be non-zero because we need to construct a non-zero element to show that x minus y is a Torsion element. So that's why we need to show that if we want to construct an element, so we need to make sure that that non-zero element that element should not equal to 0 in R. So since R is an integral domain, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल डोमेन का जो assumption है ना वो यूज होगा. So now if you multiply R with x comma y, so you will get actually R of x minus R of y, and this is equal to R1 R2 into x minus R1 R2 into y. Now using the commutative property and the associative property, not exactly the associative property, a kind of associative property, which is R2 R1x minus R1 and R2y. So we know that this thing is equal to 0. So here R2 is 0. And we know that R2y is equal to 0. So this is equal to 0. So this is equal to 0. So it means that x minus y, the product of R, x minus y with this non-zero element, it is equal to 0. So that is R into x minus y is equal to 0 for some R not equal to 0 in R, which implies that x minus y is a Torsion element. X minus y is in the power of f. Okay. So this proves the first part, that if x and y are Torsion element, then their difference is also a Torsion element. Now for the second part, it is easy to see that if ओपन कर दे वो टाइप कर. अच्छा अच्छा. Okay. Okay, sir. Okay, for the second part, so that if x is an element of tau of n and s is an element of R, so we need to show that Sx is also an element of the tau. Because now what is my claim that tau of m is an R submodule. So R submodule के लिए first property तो मैंने show कर दी that if x and y are sitting in the tau, then their difference is also sitting in the tau. Now for the second part, we need to show that if x in the tau and s is an element of ring, then the scalar multiplication of x with x should also be in the tau.
ये इतना डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज x is an element of tor, so it's mean that r of x is equal to 0 for some r not equal to 0 in R. So if you multiply the same R with Sx, so now again this could be written first in this way, and then using the commutative, since we are assuming R is a commutative ring, so this could be written in this way. And it is equal to S of Rx. And again, what is my assumption? That Rx is equal to 0. So S of 0, which is equal to 0. So again, if we multiply this R with S of x, and we know that this R is already not equal to 0, then answer is equal to 0. It shows that this S of x is also a torsion element. So this thing implies that S of x is a torsion element. That is, S of x is an element of tor of R into y. Okay, so now 1 and 2 implies that tor of M is an R submodule of M. Okay. इसकी चले एक एग्जाम्पल और हो दी थी, उसको देखने की कोशिश करते हैं, शायद इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थी. Let's say R it is equal to Z and M it is equal to Q over Z. That is, M में जो elements हैं they are in the form of P over Q plus Z, where this P and Q is a rational number. So this so Q over Z, we know that Q over Z is a Z module. Now since R is an integral domain, R which is Z is an integral domain. So this thing implies that, so we know that जो भी tor बनेगा Q over Z का, it is a Z submodule of Q over Z. But अब tor में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? सर इंटीजर्स आएंगे? चले नहीं, इंटीजर्स वो जो अगर मैं P को अगर मैंने रिप्रेजेंटेड इंटीजर ले लिया, वो तो खुद ब खुद पे 0 एलिमेंट हो जाएगा. देखिए अगर मैंने कोई R प्लस Z ले लिया तो वो तो खुद ब खुद 0 एलिमेंट हो जाएगा. तो 0 एलिमेंट तो हमेशा टॉर्जन एलिमेंट होता है, तो उसमें मुझे कोई नई चीज मिलेगी नहीं. तो इसका इनवर्स Q ओवर P? इनवर्स नहीं, छोड़े सॉरी. टॉर्जन एलिमेंट अब मुझे एक्चुअली चले मैं एक एलिमेंट आपको लेता हूँ, मैं एक बड़ा सिंपल सा एक एलिमेंट लेता हूँ, 1/2 ले दो और Z है. 1/2 को मैं किस अच्छा जो रिंग है वो क्या है? Z है. कि इसका मतलब जो रिंग के एलिमेंट्स मुझे इंटीजर्स लेना है, तो इसको मैं कौन से इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं कि आंसर क्या आ जाए? 0 प्लस Z आ जाए. बहुत सिंपल है. 2 से जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यस, बिकॉज जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट आई विल गेट 2/2 प्लस Z which is equal to 1 plus Z, and 1 plus Z किसके इक्वल आता है? ये Z में ही है 1, तो 0 आ जाएगा. हाँ, तो Z में ही है ना, तो 0 आ जाएगा. सो
it implies that 1 plus 2. So actually this simple computation shows you that half plus z is a हाँ किसी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, you will get n k, you will get the same thing. So but 1 एक भी इनफ है ना, अगर एक से भी हो रहा है. 1/2 is a torsion element. In general, what I am trying to show that in general, if you have p over q plus z, this is a typical element. So if you इसको मैं किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए. बहुत सिंपल है. Q over P. क्या? Q over P. नहीं, मुझे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. q over p is not an integer, just q से just multiply, because we know कि p over q में ये जो q होता है ये हमेशा नॉन जीरो होता है ना. रैशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर होता है ये नॉन जीरो होता है. तो इसका मतलब ये p over q में भी ये जो q होगा ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा. एंड जैसे ही आप इसको q से मल्टीप्लाई करवाएंगे, so what you will get, you will get p plus z. Okay, because what you will get qp over q, which is equal to p plus c, and p plus c क्लास किसके बराबर होगी, 0 plus c के बराबर होगी. So actually here every element, so here the torsion of z of q over z is the whole ring. यहाँ पे every element is a torsion element. And class, this is an example because मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल बताई वैसी, जैसा आपको मैंने लेट्स से इनिशियली शायद हमने डिस्कस करी थी, z6 over z डिस्कस करी थी. In the case of z6 over z, every element is also a torsion element. So हमेशा हमें लगता है कि मे बी इनके जो torsion elements के का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ फाइनाइट सब मॉड्यूल्स के लिए हो. But this is an example. This example shows you that ring is infinite, but every element is a torsion element. So ऐसे element को torsion ring भी कहते हैं. So this is an element of an infinite ring. Infinite ring because में infinite number of elements है. But this is a torsion ring. That is every element is a torsion element. So ये usually ये example थोड़ी सी interesting इस सेंस में, क्योंकि usually आप जब infinite की examples बना रहे होते हैं तब वहाँ पे आपको हर एक element torsion element नहीं दिखता. But here every element is a torsion element. In fact, this as a group के लिए भी, चलिए मैं आपको ऐसे रिमार्क के तौर पर बता रहा हूँ कि एज अ ग्रुप भी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. बिकॉज जब आप q ऑफ z को एज अ ग्रुप देख रहे होते हैं, ये ग्रुप भी है, q ऑफ z अंडर एडिशन एज अ ग्रुप. और मोर देन इट इज एन इन्फिनिट ग्रुप. बट यहाँ पे आप किसी भी एलिमेंट का जब ऑर्डर लेते हैं, जैसे मैंने p ओवर q का ऑर्डर लेना है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, जो इस एलिमेंट एक ये टिपिकल एलिमेंट है p ओवर q, z ओवर q में, q ओवर z में सॉरी, इसका जो ऑर्डर होगा हमेशा किसके इक्वल होगा, ये q के इक्वल होगा. इसका जो ऑर्डर होगा q के इक्वल होगा. वाई? बिकॉज जब मैं p ओवर q को z को जब मैं q टाइम्स ऐड करूंगा, अगर आप ऑर्डर की डेफिनेशन भी फॉलो करें, अगर मैं इसको q टाइम्स ऐड करूंगा तो इट इज इक्वल टू q इनटू p ओवर q प्लस z एंड विच इज इक्वल टू 0 प्लस z. तो आंसर क्या आएगा, q आएगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इन्फिनिट ग्रुप. यानी कि वैसे ये अक्सर बात में लिखा होता है कि गिव अस एग्जांपल ऑफ एन इन्फिनिट ग्रुप such that the order of every element is finite. तो वो एग्जांपल आपको इतनी आराम से मिलेगी नहीं. सो दिस इज अ गुड एग्जांपल. A group is infinite but order of every element is finite. बिकॉज आपके ध्यान में जब आता है कि इन्फिनिट ग्रुप आता है तो आपको लगता है ठीक है, वहां पे इसका मतलब है ना कुछ एलिमेंट्स
मुसलसल चल रहे होंगे, मगर यहाँ पे कोई हर एक एलिमेंट फाइनाइटली चल रहा होगा बट ग्रुप इन्फिनिट है, क्योंकि इससे पहले जब कभी भी आपने जितने भी ऑर्डर फाइनाइट वाले दिखे होंगे ग्रुप का, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो आपने कहा होगा ठीक है अगर फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो तब तो हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट रहेगा, बट ग्रुप का ऑर्डर इन्फिनिट है फिर आप ये बात नहीं कह सकते थे। बट दिस शोज यू के इन्फिनिट के अलावा भी हो सकता है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो। ओके, so this is just an example. Now there is an exercise that if R has a non-zero zero divisor, then show that every non-zero R module, every non-zero R module has a torsion element. या चले आप इसको सना से लिख दें, then show that an R module M has a non-zero के अगर टॉर्जन एलिमेंट, यानी कि इफ, यानी कि ये थोड़ा सा रिलेट करता है कि अगर रिंग में अगर जीरो डिवाइजर्स हुए तो इसका मतलब ये कि टॉर्जन एलिमेंट भी फिर जरूर होंगे, नॉन ट्रिवियल टॉर्जन, यानी कि अगर नॉन ट्रिवियल टॉर्जन एलिमेंट होंगे, बिकॉज जीरो इज ऑलवेज अ टॉर्जन एलिमेंट, बट इफ रिंग हैज अ नॉन जीरो, इफ रिंग हैज अ जीरो डिवाइजर्स, कि जब ये लिखा है कि नॉन जीरो जीरो डिवाइजर्स का मतलब है कि वी आर लुकिंग for interesting zero divisor. So if ring has a zero divisors, then जो मॉड्यूल उसके ऊपर कोई सा भी बनेगा, it always has a non-zero torsion element. Okay class है, any idea? कौन कौन है? आरफा, ईमान, मिसबा, अली, नायत, इमरान, उमर। सर ये काफी आसान नहीं होगा अगर मैं ले लूं ये एक्सरसाइज तो जीरो डिवाइजर ले लूं x, तो x लेट्स से अगर x, इनमें y जीरो डिवाइजर है, लेट्स से x, अगर y r, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सॉरी r, अगर r में मैं जो है वो x को एज अ जीरो डिवाइजर ले लूं तो सही, x मल्टीप्लाइड बाय y जो है वो जीरो हो जाएगा, फिर इसको मैं किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो तो जीरो ही वेरी देगा। गुड, ये सॉल्यूशन है इसका, that if let's say if R1 या आप इसको कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि if S is a zero divisor or non-zero divisor, if S is a zero divisor of R, then multiplication of RS is zero for some R naught or some R non-zero in R. Okay, तो ये बात कह रहा था। So now अब उसने क्या किया कि S को किसी भी, so for any x which is not equal to 0 in M, so वो हमारा क्लेम क्या है कि ये जो Sx है इट इज अ टॉर्जन एलिमेंट, कि अब नाउ इस S को, यानी कि ये जो जीरो डिवाइजर आ रहा है इसको मैं किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना M के, तो ये क्या बनाएगा, टॉर्जन एलिमेंट इनके बनाएगा। तो दिस इज अ टॉर्जन एलिमेंट, एंड व्हाई दिस इज अ टॉर्जन एलिमेंट, बिकॉज फॉर R, फॉर दिस R, ये जो हमने यहाँ पे R लिया था, फॉर R इन R, ये वाला जो R था, so if you multiply R with Sx, so it is equal to Rs into x,
and we know that Rs equal 0 ke equal hai. So it is equal to 0 into x, which is equal to 0. So multiplication of R with Sx is equal to 0, which shows you that Sx is a torsion element. So not a very difficult exercise. Okay, now next we have a concept of cyclic cyclic R modules. So it is like a cyclic group that is जैसे cyclic subgroup होते हैं, that subgroup generated by a single element. In the same way, or a group generated by a single element is called a cyclic group. In the same way, if a module could be generated by a single element, then that module is called a cyclic R module. So an R module M is called cyclic. Okay, so if M could be generated with the help of the single element. And what is the meaning of this thing? That if I take an element X and M, and generate a submodule by taking, ये हमने पहले भी देखा था that with the help of an element I can always generate a submodule. But here if the submodule generated by X which contain all scalar multiple of X, it is equal to M, then I will say that M is a cyclic R module. So we know that this is a trivial thing, that whenever X is an element of M, so by taking all scalar multiples of X, you can make a submodule which could be written in this way. But if the whole M it is equal to the submodule generated by X, then we will say that M is a cyclic R module. तो एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं. That Z मॉड्यूल Z की एग्जाम्पल ले सकते हैं. इवन जितने भी C6 हमारे पास हैं, जैसे Zn एज अ Z मॉड्यूल, Zn एज अ Z मॉड्यूल, बिकॉज यहाँ पे जब Zn को आप 1 बार के जब एलिमेंट लेंगे, उसको Z से जब जनरेट करेंगे, 1 बार के जितने ऊपर मल्टीपल लेते रहे तो इट इज अ साइक्लिक. In fact, every R module over itself, in fact, every R module R, that is R is a module over itself, that is R is a module over itself, is a cyclic R module. जो आप कहते हैं Z over Z, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं. किस तरह से? Because we are assuming that 1 is an element of R, because R is a commutative ring with unity. Since 1 is an element of R, तो जैसे ही आप 1 से आइडियल जनरेट कराएंगे, इनके 1 से आइडियल जनरेट कराएंगे या 1 से सब मॉड्यूल जनरेट कराएंगे by taking all scalar multiples of 1, then you will get whole R. So that's why R module over itself is always a cyclic R module. अब इसमें आप कोई सी एग्जाम्पल ले लें, Z over Z ले लें, Zn over Zn ले लें, in the same way Q over Q ले लें, Z iota over Z iota ले लें, it is always a cyclic R module. But this is an interesting example. Here Zn is over Z module,
this is also a cyclic. So it implies that is Zn is a cyclic Z module. And from this example, you can imply that Zn is a cyclic Zn module in particular. So in particular, you can say that. So Zn, there are two module structure from Z, and Zn could be considered as a Z module, and Zn could also be considered as a Z module. And both structures are and both modules are cyclic modules. But later on, we will see that as a module they are different. In fact, इनके सब मॉड्यूल्स भी एक जैसे ही हैं कि अगर इस चीज को अगर आप और से देखें, so you will find that actually you will find that Zn को, because Zn के वो दो मॉड्यूल स्ट्रक्चर हैं, it is a module over Z and it is also a module Zn. So what we have seen कि इन दोनों के जो सब मॉड्यूल्स हैं वो भी एक जैसे होते हैं. In fact, but we will see that and with the help of a concept, the concept of annihilator जो मैं define करने जा रहा हूँ, with the help of the concept of annihilator, we will see that these two structures are different structures, different modal structures. इनकी कोई ना कोई property, एक point पे आके इनकी जो properties हैं वो vary नहीं करेंगी. Okay, so now next concept is the concept of annihilator. So definition, जैसे मैंने एक M मॉड्यूल के साथ एक टॉर्जन सब मॉड्यूल अटैच किया था, in the same way with every module I can attach an ideal of R which is called the annihilator. So M के साथ initially जब मैंने M लिया था तो उसके साथ मैंने टॉर अटैच किया था, which is an R submodule. Not in general for an integral domain, it is an R submodule. But with the same R module, I can attach a new thing which is termed as the annihilator. And actually ये जो टॉर होता था ये R का सबसेट होता था, यानी कि ये सबसेट होता था, M का सबसेट होता था, and it is an R submodule. But actually this annihilator is not a subset of M, it is a subset of R. And moreover, we will see that it is an ideal of R. So there are two things which we are attaching. So to study a submodule, to study an R submodule, we are attaching two things. We are attaching the concept of tau, which is a subset of M, and more than subset, it is an R submodule of M if R is an integral domain. And now I am attaching one more thing with M, but this time I am attaching a subset of R with M, where M is an R module, and this subset, actually more than subset of R, it would be an ideal of R. So first we will see the definition of the annihilator, then I will prove that it is an ideal, and then we will see a few examples of annihilator. So the annihilator of an R module M is defined as in this way, that now it contains all elements of R such that they are annihilating. इसको annihilating का word भी use किया जाता है कि let's say कि
कि एक अगर एलिमेंट है वो किसी के साथ पूरे स्ट्रक्चर के साथ टकरा के उस पूरे स्ट्रक्चर को जीरो कर देता है, तो इसके लिए हम एनिलेट का वर्ड यूज करते हैं कि वो इसको एनिलेट करता है. सो दैट्स वाई इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आई एम कंसिडरिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ आर विच आर एनिलेटिंग एम. दैट इज ए इस इसको हम इस तरह से रीड कर सकते हैं. That A is annihilating M, और इसको डिफाइन किस तरह से करता है, that it is equal to 0. That is, इसको मोर ओवर इसको ज्यादा इस तरह से लिख सकते हैं कि whenever I will multiply A with any element of M, answer should be equal to 0. Whenever I will multiply with any element of M, that is answer should be equal to 0. That is A is annihilating M. और इसको ये कंडीशन भी लिख सकते हैं that AM it is equal to 0. That is, if you multiply A with the whole M, then the answer should be equal to 0. So actually now I am taking the annihilator of M, which is written in this way, and it is a set of all elements in R which are annihilating M. That is, whenever I will multiply an element, this element with any element of M, then the answer should be equal to 0. So इसकी चले एग्जांपल देख लेते हैं और फिर मैं तो हमारा जो क्लेम है वो ये, उसको मैं प्रूफ कर दूंगा. उससे पहले एग्जांपल देखना है. That annihilator of M, actually यहाँ पे initially you can see that this is a subset of R, and more than subset of R, it is an ideal of R. Example, let M it is equal to Zn. अब ये वाली ठीक रहेगी. And R it is equal to Z. ये first example बनेगी. And in the second example, again M it is equal to Zn, and R it is equal to Zn. Now in this case, class, what do you think? What is the annihilator? Yes, of Zn in Z, because किसी भी n को मैं multiply करवाऊंगा whole Zn के साथ, it is equal to nz. Why? Because n को मैं जब भी Zn के साथ multiply कराऊंगा या n के किसी भी multiple को Zn के साथ multiply कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. And what do you think here? What is the annihilator here? अब now elements of R are rings, तो n तो होता नहीं है. 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे Zn के साथ तो आंसर 0 आ जाएगा. तो 0 is always in the annihilator. 0 element of the ring is in the annihilator, because if we multiply the 0 element of the ring with M or with Zn, the answer is equal to 0. तो 0 तो इसमें मौजूद है. Now you can try to check 1. 1 नहीं हो सकता, because 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर 1 नहीं आता. 2 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? 2 आएगा. बिकॉज असल में 1 को 0 के अलावा कोई एलिमेंट एनिहिलेट नहीं कर रहा Zn में. 1 इज ओनली एनिहिलेटेड बाय 0, बिकॉज 1 को अगर मैं किसी भी एलिमेंट के साथ, कोई भी एलिमेंट जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? वही एलिमेंट x बार ही आ जाएगा ना. So actually here annihilator is just equal to 0 bar. So class, it shows you that that here we considered Zn as a Z module. So इन दोनों, मैं ऊपर जो आपको बता रहा था कि that we can introduce 2 different kind of structures on Zn, Z module and Zn module. But here one can see that their annihilators are different. If we consider Zn as a Zn module, then annihilator is just equal to nc. And but if we consider Zn as a Z module, the annihilator only contains 0 element. So at the annihilator level, they are different. They are different modules. So Zn
as a Z module is different from Zn as a Zn module. Okay, the last thing that I just need to show that my claim that annihilator is a that the annihilator is an ideal. So again, for this purpose, I will take two elements from the annihilator. Let's say R1 and R2 are from the annihilator. Okay, what I need to show that their difference is also in the annihilator. So if R1 and R2 are from the annihilator, it means that R1x is equal to 0 for all x and m, and R2x is equal to 0 for all x and m. So if you multiply R1 minus R2 with x, so it is equal to R1x minus R2x. So it is equal to 0 minus 0. So this implies that R1 minus R2x, it is equal to 0 for all x and m, which implies that R1 minus R2 is in the annihilator. In the same way, for the property number 2, one can see that if S is an element of or if F is an element of R, because I need to show that annihilator of M is an ideal, and R is an element of annihilator of M. It implies that is Rx is equal to 0 for all x and m. So if you multiply, if you take this thing, if you multiply S on both sides, so you will get S of Rx is equal to 0. So which implies that S of Rx is equal to 0 for all x in M. So this thing implies that SR is in the annihilator. So what is the point that if you multiply an element of the annihilator with an element of the ring, so again you are getting an element in the annihilator. So property 1 and 2 implies that annihilator of M in R is an ideal of R. So okay class, so thank you. बाकी से आगे का फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.